I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear students, how are you? Today we are going to start two kinds of tenses. इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो 4 कर चुके हुए हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड present perfect continuous. In this video, I'm going to tell you 2 more tenses, past indefinite and past continuous tense. These 2 tenses, here we are going to discuss past indefinite and past continuous. उस वीडियो में I told you again and again कि English grammar में as far as written skill is concerned, the most important thing is tenses. If you don't know about tenses, you are unable to write even a single sentence grammatically correct. So pay attention towards at least learning tenses. These things must be focused a lot. और जब tenses की बात करते हैं तो what is important thing tenses? In tenses the most important thing helping verb and form of verb. What is English? English is a game of helping verb and form of verb. Helping verb and form of verb, if you know these things, helping verb and form of verb of active tense and passive tense. Active tense and passive. Active means, I told you earlier in the present tense, कि जब subject खुद काम कर रहा हो, active state में हो. When subject is in passive state, or you may say that when object is used as a subject in the beginning of sentence. For example, हम सवाल हल कर रहे थे. It's active voice. सवाल हल किए जा रहे थे. So this is passive voice because questions are not doing any work. So active and passive. इनके helping verb form of verb. और जब arrange करते हैं तो subject, then helping verb, then form of verb. Right? Subject, helping verb, form of verb. Few days ago, in another video, I told you कि जब आप लिखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज हो रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट. Clear? Out of 12 tenses, the most important, although all are important, but the most important are present indefinite and past indefinite tense. सो प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी एक और वीडियो जो प्रेजेंट टेंसेस की वीडियो इसमें कर चुके हैं, बट हेयर हम पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस देखते हैं. राइट है, इनकी उर्दू में पहचान क्या है, उर्दू में हेल्प जो है एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, और देन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर बोथ टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस. आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. इसमें पहचान अलिफ ये वगैरह जुमले के आखिर में आता है. फॉर एग्जाम्पल, वो कॉलेज गया, राइट, वो स्कूल गई, हम कॉलेज गए. सो यू आर लुकिंग दैट नॉर्मली दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टू नो अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. Then अगर tense active हो, what I told you active means when subject is in active state, तो no helping verb is used. No helping verb is used. If you remember, in present indefinite active में भी कोई helping verb use नहीं होता. Same things also here. Next thing, in active second form of verb is used. Verb की second form use करते हैं. You know there are 3 forms of verb. Past indefinite, एक्टिव वॉइस, सेकेंड फॉर्म. एंड अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, हम कॉलेज नहीं गए, या इंट्रोगेटिव हो, क्या हम कॉलेज गए, सो देन डिड यूज करते हैं. एंड व्हेन डिड इज यूज्ड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिमिलरली अगर ये पैसिव वॉइस आ जाते हैं, उसकी मदद नहीं की गई, अब वो खुद तो काम नहीं कर, सो इट्स पैसिव वॉइस. In passive voice, helping verb will be was and were. Was with singular subject like I, he, she, it, or single name. And were used with we, you, they,
and plural names or plural subjects. And passive कोई भी होगा form will be third one. Third form of verb in all passive voice. The next tense is past continuous tense. Past continuous में एक पहचाने वर्ब बस रहा था, रहे थे, रही थी, वो सवाल हल कर रही थी. So it means it's past continuous tense. Then जब एक्टिव होगा तो helping verb was and were will be used. Was and were. Then form active में first form of verb plus ing. First form of verb plus ing is used in active voice. जब ये सेंटेंस पैसिव होगा उसकी मदद नहीं की जा रही थी, नो पैसिव वॉइस. रही थी पहचान तो सेम रहती है, बट नो द पर्सन इज नॉट वर्किंग, तो क्या होगा पैसिव वॉइस. पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, वर बीइंग, अगेन वाज बीइंग विद सिंगुलर सब्जेक्ट, वर बीइंग विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. एंड ऐसा I have told you in the previous past definite that passive में हमेशा third form, तो यहाँ भी क्या है, third form of verb is used, right? So these are the main rules. English is game of helping verb form of verb. If you don't know about helping verb form of verb, you will never be able to do anything in English as far as written skill is concerned. So इनको लाजमी सीखिए, right? Instead of expanding the things a lot, जो बेसिक्स हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करें. यू मस्ट नो द बेसिक थिंग्स, राइट? आइए अब इनको अप्लाई करने के लिए वी राइट सम सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स राइट डाउन द सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंसेस, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारी मदद की. द नेक्स्ट सेंटेंस, वो सच बोल रहा था, उन्होंने हमारी मदद की, वो सच बोल रहा था. कॉमन, लेट्स टेक द स्टार्ट. ट्रांसलेट करते हैं इनको. उन्होंने हमारी मदद की, फर्स्ट वो सच बोल रहा था, उन्होंने हमारी मदद की. नो विच टेंस इज दिस, उन्होंने हमारी मदद की. द टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मदद की, दिस इज उन्होंने खुद काम किया, सो दिस इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस है, so no helping verb be used and second form of verb will be used. So उन्होंने हमारी मदद की. Let's translate here. उन्होंने हमारी मदद की. They helped us. They helped us. They helped us. So you're looking, subject is there, no helping verb and second form of verb. उन्होंने हमारी मदद की. They helped us. Subject, then no helping verb, and then second form of verb. Past definite active voice. The second sentence was, वो सच बोल रहा था. This is the second sentence. वो सच बोल रहा था, नो रहा था. Past continuous tense. Subject is working himself, so it means it's active voice. तो helping verb with singular subject was and then first form plus ing. First form plus ing, वो सच बोल रहा था. So let's translate. He was speaking. He was speaking the truth. He was speaking the truth. वो सच बोल रहा था. He was speaking the truth. Was and first form. So what? Help subject, helping verb. This is arrangement and the main thing helping verb form of verb. Right? So ये दोनों active हो गए. Past definite and past continuous. Now next one is one more sentence. क्या वक्त ज़ाया नहीं किया गया? क्या वक्त ज़ाया नहीं किया गया? No, the tense is क्या? Past definite tense. Now क्या वक्त ज़ाया नहीं किया गया? वक्त is not working. Subject is not in active state. तो जब सब्जेक्ट एक्टिव स्टेट में नहीं है तो टेंस विल बी पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट डेफिनेट टेंस. जब पैसिव वॉइस पास्ट डेफिनेट मीन्स was helping verb and third form of verb.
So वक्त ज़ाया नहीं किया गया, past definite tense, and it is passive voice. Let's translate. वक्त ज़ाया नहीं किया गया. Time was not wasted. Time was not wasted. वक्त ज़ाया नहीं किया गया. Past definite tense, and it is passive voice. Was and then third form of verb. Again, English is the game of helping verb and verb. Helping verb and verb is everything as far as the first step of English grammar is concerned. सबसे अहम चीज हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, आप उनसे आखिरी दफा कब मिले. आप उनसे आखिरी दफा कब मिले. मिले अगेन ही इज देयर, पास्ट डेफिनिट टेंस. आप खुद काम कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस, राइट. आप उनसे आखिरी दफा कब मिले, पास्ट डेफिनिट टेंस एंड इट्स एक्टिव वॉइस. बट आप उनसे आखिरी दफा कब मिले, इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या कहते हैं, डिड लिखेंगे एंड विद डिड वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, लेट्स सी हियर हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस. आप उनसे आखिरी दफा कब मिले. सो पहले कब की इंग्लिश व्हेन, देन सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा. व्हेन डिड यू meet them, first form did meet them आखिरी दफा, last time. When did you meet them last time. Clear. When did is there, first form is there, so past reference interrogative further active voice. So when did you meet them last time, right. Next sentence, क्या अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा था. क्या अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा था. नो टेंस इज रहा था. सी हियर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट इज झूठ, नॉट वर्किंग, सो इट्स नॉट इन एक्टिव स्टेट, पैसिव वॉइस. सो जब पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस वी विल यूज वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कि अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा था. वॉज इंट्रोगेटिव है, वॉज शुरू में आ जाएगा. वॉज अ लाई नॉट बीइंग. वॉज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड इन द कोर्ट. वॉज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड इन द कोर्ट. C-U-R-T, court. So it's past continuous tense and passive voice. Was being, verb being. Plural subject होता तो verb being लिखते, it is singular, so that's why we are going to write was being. Right, so this is past definite and past continuous tense. So we have covered 6 tenses. 4 in previous video, present tenses, and 2 here, past definite and past continuous tense. Thanks, dear students.